आर यू मैड? आई मीन एक प्लान बी तो रख लेना, नहीं हुआ जीआरई तो कम से कम यहाँ रह के नौकरी करना और फिर जाना जीआरई करके, कौन मना कर रहा I want to go study computer science in the US, है? and I want to finish MCSC and all of that, right? Oh, Which is like one of the prettiest campus there is because it is like next to a mountain and a beach. oh. Right? I was the youngest in the institute, but then this instructor came and said कि we'll make a website on Allahabad. हमारे घर पे internet था नहीं, right? The badge was the attracting point, or was that No, the what attracting was the attracting point was कि this is like Microsoft, right? Like it is certifying you. एमसीसी की बुक बहुत मोटी थी एट दैट टाइम यार, मतलब मोटी बुक से तो डर लगता था मेरे को क्लास 6-7 में. And she said that, oh, there's this reporter who has come to talk to you. She just wants to ask some questions. Don't worry. Just said, there's this thing called masters in the US. Oh. Because, extended family was like, oh, like, paper में नाम आए थे सारे paper में, claim to fame हो गया था मेरा. And I feel like I regretted it for like almost a year after I got there. What parts of life that I've not touched for a while? You generally have most of the answers of what you should be doing. It was almost कि मेरे को कैसे मिल गया ये, और लोगों को पता न लग जाए. और मेरी आंखें खुली हुई तो मैंने कहा it can't be. Hello, and welcome back to your neighborhood stories. I'm your host Ayush, and honestly, I'm so pumped for this conversation. हम सब बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं. कोई क्रिकेटर, तो कोई डॉक्टर, तो कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. And most of the time, life happens, priority shifts, and those childhood dreams just fade away. No judgment, that's just reality. But what happens when a 13-year-old kid sitting in a class 7 tells a local news reporter, I'm going to do my master's in the United States, and then actually goes ahead and does it? Not because his family had connections, not because everything was handed to him on a silver platter, but because he decided that a promise made in 7th grade wasn't just a talk, it was a blueprint. Today's guest is someone I have known for decades, my best friend, someone whose journey from a small town in India to studying in the US wasn't just luck. It was about grit, persistence, and refusing to let his circumstances define the ceiling. हम बहुत बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या ये पॉसिबल है भी या नहीं, बट दिस स्टोरी, it's proof that when you say something out loud, put it onto the world, and then back it up with action, magic happens. So today joining me is Abhishek, aka Gundu, the guy who turned a newspaper quote into a life-changing reality. Enjoy the story. Gundu, welcome to the show. Thank you. So glad to be here. So glad to be here. Let's start with कि when it first happened, when the first time that you maybe said in that newspaper clipping, first tell us about that newspaper clipping, and then what did you say to the response to that reporter? Right. So I'll actually reel back a little bit and talk to about how the newspaper thing happened. Correct. तो जब when I was a kid ना, तो मम्मी पापा were very into making sure कि दादा and I, my brother, Dada and I are both doing something more than just studies. They were very aware of it, right? तो I used to be really in sports, तो वो मैं खुद खेल लेता था. Even though I used to suck at it, I used to be very religiously into it. I used to learn music because mummy got really into कि like सीखना ही है. And I used to hate it, but I used to... Auntie, if you're listening, thank you so much. I used to hate it, and like she found this person and who was my guru, and I still like, see him as that. And unse maine classical music सीखना शुरू किया, and I got really good at it, right? Like, and then I started enjoying because people started liking it, which was fun. फिर ये हुआ कि कंप्यूटर क्लास करते हैं because मेरे भाई ने when I was in class 3rd, there was a small institute घर के बगल में called Computronics, where my brother started doing some course. And at that time, computer course was mostly about introduction to computers more than anything else, right? Letters C था कि तुम्हारे पास भी एक किताब थी Letters C? हाँ, for sure. But Letters C came actually when programming was introduced, for sure. अच्छा, this is way before that. This is way before that. This is when WordStar maybe was there. DOS was something people would learn. Correct. कि कैसे folder बनता है, file बनती है, CD करो,
make dir करो and all that. So then it was like कि when I was in class 6th 7th तो ये हुआ कि इनको भी कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करना है. So we founded about this institute पास में था Kaizen where I was sent कि you know कि there was a web designing a course in which I was there. There was a guy who was I think in college BSc या कुछ and there was a girl. I still remember her name Preeti Kesarwani. She was also in she was doing her BSc third year. And This is which year you were, how old? class this point? 6th, class Class 7th. 6th. I was the youngest in the institute, right? हाँ. Like I mean, so Because they were class also 6th यार मतलब right. So हाँ. they were also very excited कि अरे you know हाँ. बच्चा आया है कि कुछ हो सकता है करे. Correct. And I was very enthusiastic. So the web designing course was about this package called Microsoft Front Page, which was in part of Office at that point. And उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना था. हुआ क्या कि 3 महीने का कोर्स था. पहला महीना मैंने किया. सेकेंड मंथ में हम लोग चले गए हैदराबाद घूमने, राइट. तो मैंने मिस किया वो. मैं वापस आया तो इतना आगे बढ़ चुका था कि मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था at that point. Story of our lives. Right. Okay, continue. But I was like कि हाँ था good at pretending. So I was like हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Again, story of our life. हाँ. But then this instructor came and said कि we'll make a website on Allahabad. Yeah, but I'm very amazed, and that is why I asked you the question before कि कौन से ईयर में था, because 1996-97 में I could have imagined 2000 में लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, but 96-97 में इलाहाबाद में वेबसाइट बनाना, Absolutely. that's a bloody big deal, yeah, seriously. Sure. I mean, now that I think about it, it was a हाँ. unique thing. It was a very unique thing Correct. कि उस टाइम वेबसाइट बनाना. Correct. At that point, it seemed like okay, there is an internet where you can go and do some things. जो कि funnily enough हमारे घर पे इंटरनेट था नहीं, right? So, but then at that point you needed to connect your phone line to the computer. Correct. To get the dial-up internet. Dial-up, हाँ. Modem होना चाहिए Correct. था, right? तो कहीं से तो सेकेंड हैंड मोडेम पापा ने खरीदवाया, किसी तरह हम लोग ने हाथ पैर जोड़ के. बट ये you had to get an account with BSNL. Correct. To log in. So there was this account which was floating around. पूरे इलाहाबाद में. मतलब I feel like in the whole world I think. And the password was Gulab 2000. I still remember. भैया मतलब And तो साइबर सिक्योरिटी नहीं थी, right. काफी कुछ हो रहा था गुलाब. And we all used to browse on it. Like I browsed on it for months, right? And मतलब then I found out कि स्कूल में भी कुछ लोग हैं जो सेम अकाउंट पे कर रहे हैं, right? So I don't know who Mr. Gulab was, but whoever it was, thank you. Thank you. Right? So that is how the introduction to internet happened, right? And then ये हुआ कि वेबसाइट बनानी है, तो I didn't even understand, and it was like 5-6 pages की वेबसाइट होगी. You all get content. So I remember मेरी नानी was a history teacher, so she had a lot of independence के time का projects and all that. तो मैंने वो सब छाना, typing किया. And then by the end of it, there were 3 people in the class, so everybody was working on the website. फिर ये हुआ कि अब ये host करनी है, host कैसे होती है. So there was a site called freeservers.com which would allows you to host anything for free. So it was hosted as allahabad.freeservers.com, and then the guy who was my instructor, his name was Dinesh, I still remember. But he came and said ki, you know, why don't we we'll put it as you have made the website. अच्छा. The full thing, right? Put it where? Like, you know, we market it that way. Market it that way because, you know, it is the institute ka bhi hoga. You are young, you have done a lot of work, and I was like, fine, you know, like, because I have done work and, you know. एक महीना मिस करके मैंने काम तो किया ही है. Correct, right? And then I was like, ये तो, and then I was also actually very inspired by the whole institute because at that time I got introduced to this thing called MCSE. There was a certification called Microsoft Certified Software Engineer. Ooh. And MCSD भी होता था, Microsoft Certified Software Developer. So this was Microsoft के exam. And they used to have a really thick book to study about like Microsoft OS. And you know, the person who owned the institute, Prashant Sinha, his name was, he had completed all of the MCSE courses in 18 months, which was a very, very big deal. And I was like, you know, I also want to do this. And I used to get a badge from Microsoft for it. And I was like, this is amazing. But then the badge was the attracting point, or was that no, the attracting point was point? Attracting point was ki this is like Microsoft, right? Like it is certifying you.
But now Microsoft is Microsoft. In that 1997, time only Microsoft existed, right? okay. You know, this revolution of computers was about whether it's a there was a term called PC, Hmm. right? Personal computer. Personal computer, Huh. whereas the other was like a mainframe or a Hmm. workstation. Correct. So there was a change in which people started buying computers to put at home. Correct. It was a revolution which was coming, right? Hmm. Like people were not really aware ki what it is. But what So made you very interested in that revolution? Because it was about computers, and you were this just was class 6, 7, right. and like तूने बोला वो MSSC, MCSE. MCSE, MCSE की बुक बहुत मोटी थी. At that time यार मतलब मोटी बुक से तो डर लगता था मेरे को क्लास 6, 7 में. But I was like computer तो हो जाएगा मेरे से Oh, because I so it used came naturally. हाँ I was good at computers when I was in हाँ. class 6. जब introduction हुआ हाँ. programming में कर लेता था and programming basic पे होती थी Hmm. and it was not tough. It was Hmm. just logical. It was like triangle तेरे लिए बनाना. because तेरे लिए easy था. Sure, right? हाँ. Because maybe logic came maybe naturally to me. I was not good at studies as such, but I was like computers I could understand. Hmm. But then again, book मैंने कभी खोली नहीं. That is also the point, right? हाँ. Because it was like कि मेरे को ये करना है, Correct. right? Then एक बार ये हुआ तो फिर उसके बाद one day then I came to the institute where there was this person and she said that, oh, there's this reporter who has come to talk to you. Hmm. She just wants to ask some questions. Don't worry, just say whatever comes to your mind. मतलब impromptu podcast तब भी चल रहा था. I know, right? I mean, हाँ. And I didn't know, like I didn't know कि paper में आएगा. I didn't know anything, हाँ. right? And she asked me and she said, why? What do you want to do? Hmm. So I said, मेरे को MCSE करना है, Hmm. you know, all that. And at the same time, you know, one more thing had happened. Parallelly, my brother, he had gone to college. So I saw the struggle he went through Hmm. with IIT, Hmm. right? Because he was a very good student. Hmm. And then uska like DICT में जब हुआ, Hmm. he went there and I got exposed to that college as well, which was like one of the coolest colleges I've seen. He had a friend called Shorik. So him and I started talking and we spoke about what is he going to do. And he said, you know, there's this thing called masters in the US. Oh. क्योंकि you can go and study there, computer science. Hmm. So I'm applying to some schools. कहीं ना कहीं हो जाएगा. तो मैंने कहा कैसे करते हैं? तो उसने बोला GRE करके एग्जाम होता है वो लिखते हैं. Oh. And I remember where I was sitting in my this thing House. in my But with that- seat. So like अपने से पहली एक generation जो गई होगी. Correct. He was in that, right? फिर I kept being very curious about what he was doing because उसका University of Kansas में हो गया था, Missouri, University of Missouri at Kansas City. May he got admission and he went. So at the same time this interview happened and I basically one thing I said was I want to go study computer science in the US and I want to finish MCSE and all of that, right? Oh, that you told to the interviewer. हाँ. Right? So that was like a full circle कि हाँ. मैंने, because the inception हो गया था मेरे को उस हाँ. समय. So that is where it started. So, but basically the inception was because that cool cousin of yours said कि अच्छा वहाँ पे ऐसा होता है, GRE बोल के एक एग्जाम होता है. You were not actually convinced or swayed by the movies and No, nothing to do with what is US. I didn't know what was Chicago versus California. Right? No, because that is what the question I wanted to ask you at a certain point in this storytelling is कि what was the first thing that you thought about US? कि US क्या है? Because यहाँ तो तेरे को पता ही नहीं है. Right. I thought यहाँ पे हो सकता है तूने वो सोचा होगा कि यार मूवीज से इंस्पायर होगा कि यार यहाँ तो जाना चाहिए. There was zero glamour about it, right? So the only that's why I told you about Dada ka struggle, right? Because the two things that played in my mind was that I am not good with competitive exams, right? Like because there are a lot of people who are much smarter at me in school who are more hardworking. मेरा मन ही नहीं लगता था उस तरह की पढ़ाई करने में. And at class 7th, I was thinking this, 8th, whatever. So I was like कि हाँ ठीक है, मतलब this seems like a good option. And then I remember I wrote a Hindi essay also in my exam कि मैं US जाऊँगा and मैं इंडिया वापस आऊँगा इंडिया के लिए कुछ करने. Class 8th में. I still remember. I remember reading it. And being like कि करूँगा मैं and I want to come back and do something. But उस एज में ये वाली thought process होना बहुत ही amazing है गुंडू, seriously. पता नहीं यार मैं बस like it was just something that Whatever felt cool.
I don't whatever think felt like the so. right thing to do, whatever felt like things that I should be doing. See, the reason of going there was also process of elimination. In that, when I look back in that small head of mine, right, it was Explain like further. कि like Process of I elimination. कि like IIT नहीं करना है, हाँ. right, 12th Oh, खत्म हो you're जाएगा, eliminating your choices. yeah, Okay. right, कि I'm not, ये नहीं करना है, US जाना is a good option. It also sets me apart, US जाना है. sure, because I'm doing something different. It's not unachievable because एक एग्जाम है, let's see क्या होता है. But that was IIT also, which would have set you apart. बट IIT मैंने देखा है ना लोगों को 3 साल ड्रॉप करते हुए. The age that we were growing up, you having gone to Bansal would I mean Kota, Students. would know that everything was about कि कितने colleges निकाले हैं, right? Everything was about कि कैसी चल रही IIT की तैयारी, कैसी चल रही इंजीनियरिंग की तैयारी, यूपी सीट कैसे हुआ, AIEEE तो उस समय नहीं था, मतलब जस्ट होने वाला था. बट मैंने अपने भाई को इतना क्लोजली एनालाइज, पापा मम्मी भाई मैं बैठ के इतने इन्वॉल्व थे सबके साथ. and somewhere in that whole process, right, it made it so futile because it just made it not worth it. Because there's so many people trying to, like, it just felt like a race. Now looking back at it, at that point I feel like I just went through also finding it a little bit more real because computer science, right? Because I like it. Correct. I'll go study something relevant. Because it came also very naturally to you. I mean, yeah, at that time. And also there was this fluff of कि अरे पेपर में नाम आया है, ये तो computer wizard है, you know, whatever. Because, you know, extended family was like, oh, like, you know, पेपर में नाम आए इतने सारे पेपर में, you know, claim to fame हो गया था मेरा family में. Oh. तब तो WhatsApp भी नहीं था. So a funny story, after this I was like कि यार यहाँ तो रुकना नहीं है, मेरे को same institute के साथ अब Visual Basic का कोर्स करना है, right? 2 हफ्ते में मेरे को समझ में आया कि मेरे को घंटा कुछ नहीं समझ में आया. फट के हाथ में आ गई थी मेरे कि यार ये नहीं होएगा. उसके बाद भी तूने बीटेक कर लिया है. तब तक तो मैंने अनाउंस कर दिया था दुनिया, तो इज्जत की बात हो गई. बट लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल ना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा होता है यार कि अपन ने चौड़ में आके बोल दिया, अब बॉस करना है, करेक्ट, और अब नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा. इन दैट मोमेंट हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट यार? एक्चुअली एक्टिवली ये थॉट कभी नहीं था कि, मतलब ये था कि मेरे से कोर्स नहीं हो रहा है, राइट, एंड दे हैव 5 थिंग्स टू ब्लेम कि क्यों नहीं कोर्स हो रहा है, कि बीच में तबीयत खराब हो गई तो अब समझ में नहीं आ रहा है, सर व्हाटएवर, यू नो, देयर आर डिफरेंट रीजंस. बट देन यू कुड पुट इट बिहाइंड यू एंड बी लाइक कि ठीक है देखते हैं क्या होता है आगे, राइट. अच्छा, सो यू वेंट विद दैट थॉट ऑफ प्रोसेस. कोर्स, हां, मतलब you did not think about दिस वाज नॉट अ सेंट्रल थीम इन माय लाइफ कि यूएस जाना है. हाँ, इट वाज अ थीम, इट वाज अ कि थॉट. बोल दिया एक बार, विल सी, फिगर इट बहुत आउट. चीजें बोली हैं राइट. अभी तक आई वुड हैव हैड लाइक 6 पैक्स फॉर लाइक 20 इयर्स अगर आज बोली हुई चीज करनी होती तो. इवन गोइंग इनटू एसआरएम आई डिडंट नो कि मेरे को मास्टर्स करना है. लाइक मेरे मन में थॉट था कि मैं यूएस जाने का ट्राई करूंगा, बट होगा कि नहीं होगा, हु नोज. Because I feel like the younger you are, the less you think of consequences. You think of inputs more when you're young. You're talking about innocence. You could call it innocence, but it could be more presence. Because you're not thinking You're no about the outcomes. responsibilities, You have no na? responsibilities. Right, there's no कि देखा strings. जाएगा, अरे बोल तो दिया ही है, क्या फर्क पड़ता है. Correct. In the SRM, I know SRM में तूने कंप्यूटर साइंस किया एंड देन तूने जीआरई लिखा, बट उसमें एक पार्ट आया गुंडू, विच आई डोंट थिंक वी हैव डिस्कस दिस इनफ, बट उसमें एक पार्ट आया जहाँ सबका 3rd ईयर में, जहाँ सबको कैंपस के लिए बैठना था, राइट. हम सब बैठे थे, हम सब तैयारी करके गए थे कि अब भैया कैंपस में बैठना है, बिकॉज दिस इज इट. तू अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, अंकल रहते थे शारजाह में, आई रिमेंबर दैट. और तू, जब हम सब हमारे प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे थे, तू गया था शारजाह, राइट. एंड देन तू एक भी कंपनी में नहीं बैठा. दैट वुड हैव टेकन सम गट्स यार, कि बॉस मैं बैठूंगा ही नहीं, देयर इज नो प्लान बी, दिस इज इट, जीआरई ही निकालना है. तो अपनी जीआरई की प्रिपेयर करने गया था शारजाह, एंड यू डिड नॉट सेंड इन एनी ऑफ द प्लेसमेंट्स. इन दैट मोमेंट ऑल्सो आई थॉट कि आर यू मैड, आई मीन एक प्लान बी तो रख लेना, नहीं हुआ जीआरई तो कम से कम यहाँ रह के नौकरी करना और फिर जाना जीआरई करके, कौन मना कर रहा है. बट यू नेवर सैट. हाउ डिड दैट हैपन? वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस एक्चुअली फॉर सम रीजन.
So I think there are two things. First was that I think I sat in TCS. Really? Yeah, I did sit in TCS. Okay. First company. That was first company. First company. First But I didn't rejection. accept. बिकॉज मेरे को याद है एक इंग्लिश टीचर हुआ करती थी हम लोग की जो प्लेसमेंट हेड थी. तो मैं उनसे पूछ के आया था कि मैं जीआरई दूंगा, मैं जा रहा हूँ मास्टर्स करने, बिकॉज देयर आर सम पीपल इन दैट ग्रुप लाइक इंटरनेशनल हॉस्टल में खास के International hostel. William Mike I know. who were in the same boat. And she said कि you cannot accept because आपने accept कर लिया तो you are taking a seat away. So you go check it out, but you don't accept the offer. There was a point where I thought कि यार कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, right? Like I mean I feel like एक ये था कि जीआरई में क्या करना है, like वर्ड्स याद करने हैं, एग्जाम देना है. कई लोगों ने 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, राइट? देन यू हैव लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एसओपी, एंड देन यू अप्लाई टू कॉलेजेस. कॉलेजेस में यू देयर इज अ होल थिंग ऑफ बेस्ट, मीडियम, वर्स्ट. Correct. कुछ ना कहीं बैठ जाएगा. Yeah, so okay, let me ask this question a little differently. I am drawing a parallel from when we were doing engineering. हमारे पास 4-5 एग्जाम्स थे. SRM का अलग एग्जाम था, IIT था, AIEEE था, प्लस सब कॉलेजेस के अपने अपने हो रहे थे. यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम है, जीआरई. ठीक है, उसमें दो या 3 सब्जेक्ट्स थे मेरे ख्याल से. 3 सब्जेक्ट्स थे, है ना? तेरे को वो करना था. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू सेड वाज अ प्लथोरा ऑफ कॉलेज, बट द फनल वाज जस्ट वन, श्योर, विच इज जीआरई. वहाँ हमारे पास फनल के बहुत ऑप्शंस थे, हम उसमें से कॉलेज चूज कर रहे थे. बट तूने ये कैसे सोचा कि अच्छा यही एक फनल है पर मैं फोड़ दूंगा यार, इतना तो है ही कि यार देयर वाज समथिंग अबाउट बीइंग जज्ड by something you're good at versus you're not good at. I think I was okay with writing my recommendation, writing my SOP. Obviously, my brother, my papa helped me a lot. But at the end of the day, I feel like holistically, I was a smart person, is what I believed. But अभी भी हाँ, अभी बिलीव है वो तो. right. And I also felt कि SRM में जो पढ़ाई होती थी एंड ये एंट्रेंस एग्जाम का जो 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 यू नो द अपहिल वाज दैट आई वाज नॉट गुड एट, राइट? इवन एट दैट टाइम आई बिलीव कि अगर मेरा किसी तरह हो जाए आईआईटी में, आई विल बी वेरी सक्सेसफुल, राइट? सो फॉर मी इट वाज ऑलवेज लाइक कि कुछ ना कुछ तो कर लूंगा. लाइक इफ आई रियली वांटेड टू, आई कुड हैव डन रियली वेल एट SRM, राइट? बट मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ाई करने का बिकॉज आई फेल्ट इट वाज यूजलेस. एंड देन यू नो द वे एप्लीकेशंस वर पुट टुगेदर फॉर यूएस मेड सेंस टू मी, राइट? कि लॉजिकली ऐसा होना चाहिए. करेक्ट. यू आर लुकिंग एट अ पर्सन, यू आर आल्सो लुकिंग एट देयर मार्कशीट्स, यू आर लुकिंग एट देयर होलिस्टिक थिंग कि मतलब व्हाट आर दे इन्वेस्टेड इन, डाइवर्सिटी है वो. दैट टू मी वाज अ मोर ह्यूमन वे टू इवैल्यूएट समबडी. सो गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस यू डिसाइडेड कि यार मेरे को, मैं काम वाम नहीं करूँगा, नौकरी नहीं करूँगा मोस्टली, आई विल फिगर सम वे और द अदर टू गो डू अ मास्टर्स. करेक्ट. दैट इज अ गुड इनफ कॉन्फिडेंस. हाँ, कि मैं कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूँगा. कुछ ना कुछ हो जाएगा. सिंगापुर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में देयर वाज आल्सो एन एक्सपोजर क्योंकि भैया के बहुत सारे फ्रेंड्स, जब भैया ने जब तक कॉलेज खत्म किया, करेक्ट, went to स्विट्जरलैंड एक बंदा गया, एक यूएस पे कई लोग गए, एक शलभ करके एक बंदा था यूएस गया था. And so there was more exposure now. Shaurik was already there. There were more people who we knew. पापा के कुछ मतलब जूनियर कोलीग्स थे जो जा चुके थे. तो we had some people who knew how life in the US is, how पढ़ाई in the US is, किस तरह की पढ़ाई होती है, practical होती है, you know, you're interning and all that, which made more sense to me than going to a TCS or a... Now the next question I'm gonna ask is from a very very जनरल पॉपुलेशन काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. जब तू इस प्रोसेस में था, तेरे सारे दोस्त जा रहे TCS में सिलेक्ट हुए, तेरे सारे दोस्त गए CTS में सिलेक्ट हुए, फिर HCL में सिलेक्ट हुए, ब्ला ब्ला ब्ला, सब सिलेक्ट हो गए प्लेसमेंट में. कभी न कभी एक बार सेल्फ डाउट तो आया होगा ना कि बॉस हैव टेकन द राइट डिसीजन और नॉट, बिकॉज एवरीबडी सो हैप्पी कि यार हाँ हो गया, नौकरी करेंगे या फिर नौकरी के साथ पढ़ाई करेंगे. आई कुड हैव टेकन दैट राउट कि नौकरी करता साथ में पढ़ाई करता रहता. श्योर, राइट. ये बहुत हुआ कि यार ये लोग तो मस्ती करेंगे. एग्जैक्टली, राइट. वो सेल्फ डाउट. करेक्ट. बट फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लोर पोटेंशियल. मतलब टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. आई एम लाइक, आई वाज लाइक दिस यार कौन करेगा ये दूसरा IIT, राइट? देयर वाज नो वे दूसरा IIT. And
मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था एमबीए में, लाइक आई फेल्ट लाइक नहीं इट एमबीए तो वाज क्वेश्चन में भी नहीं आ रहा है नहीं नहीं, मेरा तो तो। देयर वर टू ऑप्शंस ना ऑल द टाइम। आई नो बट वहां तो मैं इसलिए भी नहीं जा रहा बिकॉज उस टाइम तेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो एकदम बहुत फोकस था कंप्यूटर साइंस के लिए, हाँ बट देयर वाज तो ऑलवेज टेक्निकलिटी में मजा रीइवैल्यूएशन आता दो, था। राइट? व्हाट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट वाज कि जॉब एंड स्टडीज वर्सेस जस्ट स्टडीज, दैट इज द पार्ट, बिकॉज उसमें बहुत सेल्फ डाउट आता है जब आपके दोस्त आप देख रहे हो कितने खुश हो रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं, क्या मेरा हो गया मेरा हो गया मेरा हो गया, एंड यू आर स्टडिंग एट दैट पॉइंट फॉर जीआरई, तेरा उस टाइम निकला नहीं था, तब तेरा जीआरई का पेपर नहीं होता इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So I actually, to be very honest, I used to love challenging myself. हाँ, I used to love challenging myself, देन दैट इज वेयर especially यू on आर ड्राइंग योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम। yeah, especially for हाँ, serious shit. कि अरे देखते हैं बॉस। कि कुछ ना कुछ तो करूँगा, हम्म right? कि अननोन है, कि हम्म मतलब आज तक कोई नहीं गया यूएस हमारी फैमिली में, हम्म राइट? कोई छोड़ने नहीं जा रहा क्योंकि बहुत महंगा है, राइट? क्या होगा नहीं होगा, एंड देन जिस कॉलेज में जाना है, हाउ यू नो वेयर इज इट, पता भी नहीं था जब तक अप्लाई नहीं किया मैंने जगह जगह। आई डेंट नो विच सिटी, ऑफ व्हाट वाज कोर्स। सिटी, व्हाट वाज स्टेट, आई हैड नो आइडिया। एंड देन इट वाज लाइक, देन इट बिकेम लाइक कि देखा जाएगा, व्हाई नॉट। सो यू ड्रॉ कॉन्फिडेंस फ्रॉम कि एब्सोल्युटली, एक बार तो चैलेंज करके देखते हैं। एब्सोल्युटली। कोई प्लान भी था तेरे दिमाग में कि अच्छा नहीं हो तो फिर मैं ऑफ कैंपस बैठ जाऊंगा? नहीं, हाँ, अमेजिंग। बट हाँ, कॉलेजेस का प्लान भी था। हाँ हाँ, बिकॉज तूने बताया ना 3 टियर में तूने कॉलेज डिवाइड करके रखे हुए थे। अब तेरा जीआरई निकला, तूने अपना भरा, तेरा जॉर्जिया टेक हो गया। नंबर 1 तो मैं उस मोमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जब तेरे को आया कि Oh, I still remember that जॉर्जिया moment. टेक हो That गया। was so fucking amazing. हाँ, तो मैंने जब अप्लाई किया था ना, there used to be a forum called Edulix. सॉरी बस एक क्वेश्चन, हाँ जॉर्जिया टेक तेरे कौन सी टियर ऑफ कॉलेज में था? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो Edulix था, उसमें लोग पोस्ट करते थे कि कौन पिछले बैच एडिलिक में क्या गया था? हुआ है। There was a forum like जिसमें अच्छा, ऑनलाइन आप पोस्ट करते अरे हो। जैसा भी पागल का या समथिंग फॉर हाँ एमपी कॉलेजेस, एग्जैक्टली, राइट? पागल का हाँ एग्जैक्टली हाँ, लाइक, बट फॉर दिस वाज फॉर जीमैट जीआरई है वो। करेक्ट। तो उसमें मैं बहुत पढ़ता था, लोगों के फ्रेंड्स बन गए, फ्रेंड्स मतलब जान पहचान के, कई लोगों के लंबे लंबे पोस्ट। देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक डिसिप्लिन एंड कमराडरी कि ऐसे ऐसे करना है। तो उसमें लोगों की स्ट्रैटेजी कर करके, एंड देन लोगों से बात कर करके, पापा के जो कोलीग थे शौरिक, शलभ, सबसे, मेरे को याद है मैं कॉलेज जा रहा था, ताम्बरम में ट्रेन घुस रही थी, मैं शलभ से फ़ोन पे बात कर रहा था। हम्म शलभ वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हम्म गेंसविल में, ही वाज डूइंग एमबीए और एमएस एमएस। सीएस। हाँ, अभी फेसबुक में है वो। ओके। तो उसने मेरे को बोला था मत आओ, यूएससी बिकॉज मत आओ। हाँ, क्योंकि तो देखने में वहाँ से बहुत ग्लैमरस लगता है, हाँ, बट यहाँ आके हालत ख़राब हो जाती है, हम्म जितनी पढ़ाई होती है तुमसे नहीं होगा। हम्म एंड आई वाज लाइक ओके, अब हम्म तो मैं तो आ रहा हूँ, हम्म राइट? बट एनीवे, जो मेरे कॉलेजेस डिसाइड हुए थे उसमें इन माय बॉटम 3 वर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो था, एंड एक और कोई बॉटम में कॉलेज था, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। मिडिल में मेरा था एक यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया था, और सनी स्टोनी ब्रुक था न्यूयॉर्क में, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा था गेंसविल में, जिसमें शलभ जो गया शलभ था। मना किए थे कि मत आना। हाँ, हाँ, और टॉप में जॉर्जिया टेक था, कार्नेजी मेलन था, ओह, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बार्बरा था, which is like one of the prettiest campus there is, because it is like next to a mountain and a beach, ओह, right? So ओके। वहाँ नहीं, एक्चुअली कार्नेजी मेलन नहीं था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो था, हम्म and Santa Barbara सेंटा was my बारबरा। ओह, dream, because it हाँ, was like one of the most unique courses. So another thing about MS was कि you had to read about the school when you're writing this SOP, कि आपको क्या करना है, किस तरह का कोर्स है, कौन सा स्कूल किस चीज़ में अच्छा है, right? So I remember Santa Barbara had a very good program, practical program. Georgia Tech was a more research program, and USC was like a haven for getting a job because it is in LA, कैलिफोर्निया में तुरंत जॉब हाँ, लग बगल जाती में थी, सिलिकॉन वैली में। हाँ, एंड इसमें लाइक एवरी क्रेडिट रिक्वायरमेंट वाज लो एवरी सेमेस्टर, तो 3 सब्जेक्ट लेने थे सिर्फ, ओह, एंड यू हैड टू कंप्लीट इट इन 4 सेमेस्टर्स, तो 2 साल में 3 3 3 3 3 करके। हाँ,
जॉर्जिया टेक में एवरी सेमेस्टर हैड टू टेक 4 कोर्सेज एंड हम्म कंप्लीट इट इन 1.5 साल में, हम्म राइट? 1.5 साल का कोर्स था, 2 भी कर सकते हो बट 1.5 साल का था। तो मेरे को सबसे पहला एडमिट आया था UIC से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा गेन्सविल, राइट? दिस वाज बोथ केम इन व्हेन आई वाज इन माय सेक्रेटेरिएट कॉलोनी वाला घर, आई हम्म। रिमेंबर। एंड देन था फ्लोरिडा जाना है बिकॉज शलभ भी गया है, गुड स्कूल ये वो। um, फिर आया USC से एडमिट। तो 3 साल आ चुका था ऑलरेडी। हाँ, हाँ। USC से फिर एडमिट आ गया, हम्म। सदर्न कैलिफोर्निया से। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में मेरे को गेम डेवलपमेंट मैंने अप्लाई किया था ओ। बिकॉज मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग करना था एंड इट हाँ वाज नोन फॉर गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट नहीं मिला था, रेगुलर कंप्यूटर साइंस मिला था, दैट वाज हाँ। इट। एंड देन आई रिमेंबर हम लोग के वो वाले घर में थे, चेटपेट वाले घर में। हम्म। एंड मैं देखा और मैं सामने जॉर्जिया टेक का एडमिट आया था ओ। और मेरी आंखें खुली हुई। तो मैंने कहा इट कांट बी। फिर मैंने अक्षय को बुलाया, मैंने कहा ये हाँ मेल पढ़, हाँ एडमिट है ना? हाँ। And like we were all like insane, साइक्ड। yeah. हाँ। And it was unreal, like हम्म I remember calling papa, mummy, bhai, dada, and like I was almost in tears. हम्म And but in my head I was like कि Georgia Tech नहीं जाएंगे. 2 reasons, because one, it is too expensive, and 2, because it was very tough, right? So there was this awareness that it is like going into IIT, हम्म। right? और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया और SRM नोइंग के में। MIT के लेवल के नहीं है। मोर देन दैट कि मेरे कोई फाउंडेशंस नहीं है, हाँ। राइट? कि व्हाट एम आई गोइंग टू स्टडी, हम्म राइट? एनीवे, फिर उसके बाद बहुत सारे एनालिसिस हुआ, तो फिर ये हुआ कि हाँ, मतलब पापा वाज लाइक कि नहीं विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। हम्म। नहीं, पर मैं वो वाले फाइनेंशियल बात हम्म, मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट जब तूने बोला कि तेरे को लगा कि यू आर नॉट इवन केपेबल ऑफ गेटिंग देयर बिकॉज तेरे या फाउंडेशन नहीं है, या फिर वहाँ से तू कैसे डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है यहाँ चलते? बिकॉज सदर्न कैलिफोर्निया से आ गया था, चल ठीक है गेमिंग नहीं मिला पर कहीं और तो मिल गया। करेक्ट। तो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कि बस वहाँ चलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं एब्सोल्युटली। यार। आई मीन माय मंत्रा वाज कि इफ इट इज समथिंग हार्ड, व्हाई नॉट? अच्छा, बिकॉज ऐसा चैलेंजिंग योरसेल्फ क्यों नहीं अगेन। होगा जो मैं नहीं कर सकता, तो राइट? चैलेंजिंग योरसेल्फ अगेन। एब्सोल्युटली। ओह ओके, And it इंटरेस्टिंग। was like, see, two things were important, and they were step functions, which is why financial is important. First thing was, it is not even worth it. हम्म And then it was like, it is too tough. हम्म But when it became worth it, कि हम्म मतलब, Papa was like, कि हो जाएगा, हम्म कि एक loan ले लो तुम अपने ऊपर, rest we'll be able to manage. And we'll see, करेक्ट। राइट? एंड जितने लोग आइडियलिक्स पे या उस फोरम पे जॉर्जिया टेक गए थे, उनसे बात करना शुरू किया कि GRA करके कुछ होता है वेर यू कैन गेट रिसर्च असिस्टेंटशिप, बट देन मोस्टली लाइक 5 or 6 people get it in a semester, उससे ज़्यादा नहीं Oh, मिलती then है। challenge accepted Right. in that moment. And I was like, पता नहीं वो होगा कि नहीं, so I was prepared for paying the entire हाँ। fee, मतलब पापा paying the entire fee obviously. हम्म And I remember हम लोगों ने 12 लाख का लोन लिया था। एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि प्रोज एंड कॉन्स, राइट? USC स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स, you'll get a job. Georgia Tech, chance of a lifetime, right? I was like, let's take the chance for a वाओ lifetime, right? ओके। And बट थोड़ी हिम्मत तो लगानी पड़ेगी। अरे बहुत, and I feel like I regretted it for like almost a year after I got there. Of course, For we're gonna talk every about day, that a little हाँ. bit. हाँ But like it was every day I was like USC जाना चाहिए था, हाँ। and I knew people who had gone to USC. और मजे मारे होंगे वो बीच पे बैठ के। हाँ, correct. And it हाँ was just so frustrating because हाँ also the people I was surrounded with were like absolute nerds हाँ। who had come from insane places and were not like me. Nobody would learn to cheat. बट जब तूने वो देखा इन दैट मोमेंट, जब तूने वो देखा कि अच्छा हाँ ये है, दो चीज़ों के बारे में बात करनी मेरे को। जब तूने उसमें देखा, was there a moment of कि boss, there's a huge relief in terms of a weight which has been lifted off me, वो कि I've पहले एडमिट पे आ गया achieved था, something? पहले एडमिट पे आ गया था। अच्छा पहले मैं आ गया था बोला UIC में मैं I had imagined a life in Chicago. कि बॉस आई हैव मेड इट, Done. दिस इज व्हाट माय ड्रीम, आई हैव मेड, आई एम नॉट इवन गोइंग बैक टू द रिपोर्टर। वहाँ तो उस टाइम दिमाग में नहीं आएगा कि रिपोर्टर का बोला था हो गया, आई डोंट थिंक सो हुआ होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर ये होगा कि बॉस दिस इज समथिंग दैट आई हैव अचीव्ड, Yeah. आई हैव Because फकिंग मेड इट। I was, see, SRM के बाद I was very prepared to go to a school which is not great but being the best, right? So I was like, मेरे lowest school में भी अगर हो जाए मेरा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा फिर। सेकेंड पॉइंट में इस बार बात करना था कि शलभ ने तेरे को बोला स्पेशली कि यार मत आ, दैट डिड नॉट डिटर यू एट ऑल? अब हर जगह थोड़ी ना तू चैलेंज एक्सेप्टेड करता Sure, जाएगा। sure. No, it scared me.
It would have, yeah. I'm Absolutely, it scared 100%, me, yeah. right? Hmm. And I spoke, actually, Bhaiya was also a very big help because he was like a counsel because you could talk about, he knew who I was. Hmm. And we could talk about, like, इ- इतना कितना ही difficult होगा, right? What are the things that are hard? You have to live life on your own. You have to cook your own food. No, so let me unwrap that Hmm. thought process a little bit. So basically, you then deep dived into the entire thing to figure out कि क्या difficult हो सकता Absolutely, है. absolutely, उस एक माउंटेन से नहीं डरे अपन ने उसको काटना चालू किया कि अच्छा ठीक है, इस absolutely. पार्ट को यहाँ रखेंगे तब देखा जाएगा, इस पार्ट को यहाँ रखेंगे तब देखा जाएगा. बिल्कुल analysis for you see. बहुत एकदम डीप में जाके एनालिसिस है. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इन लाइफ व्हेन यू आर Right. फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज. So क्योंकि this is, सामने से yeah, देख के माउंटेन बहुत बड़ा दिखता है, right, right, right. बट जब आप उसको थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करो और उसके बारे में सोचना चालू करो, देन इट बिकम्स कि हाँ ठीक है, हो जाएगा. Hmm. So I feel like my family, my papa and bhaiya both are very analytical. Mummy also. So they always good at like doing differential analysis of things and like कि ये ऐसा है वो ऐसे है करके eliminate किया कुछ कुछ करके. And I think that was natural in the conversations. So there was always analysis of every aspect. कि क्या pros हैं क्या cons हैं. So Nice. that I think I got in Virasat because You're still in India, by the way. yeah, I'm हाँ. absolutely in India. हाँ. College खत्म हो गया है मई में कॉलेज खत्म हुआ. and I was the first one to go home if Yeah. you remember, right? Yeah. And then there's nothing till I go to the US. जून जुलाई, तो जुलाई में चला गया था. May 13th को कॉलेज खत्म हुआ है. करेक्ट. हम घर गए. तो जुलाई में फ्लाई आउट कर गया था. 27th. It was the longest 2 months of my life. Oh. Because this is the point. This is where my friends are continuing their college. College नहीं. We were not in मतलब college. College, like living with each Okay. other, figuring life out. Hmm. I am college खत्म हो गया है, दोस्ती is वहाँ. I am going to a new world. Now all the excitement, now shit is getting real. Now shit is getting real. So Yeah. I thought in that flight moment that would have hit you, but No, okay, that hit no. before that. Flight is already, एक बार flight में बैठ गए तो दुनिया भूल गए हो आप. अब तो जाना ही है. हाँ. Okay. Flight के पहुँचने तक, buying my clothes, getting my visa, seeing my grandmom's health disintegrate every single day. And while you have to take that flight, हाँ, and I knew हाँ. when I was कि मैं हो सकता है ना मिलूँ इनसे. And she passed away November 5th. I left in July. And it was one of the worst periods because I feel like I hated being in, like I just wanted it to happen tomorrow कि मैं चला जाऊँ. Because I remember the smell of the house at that time. I remember going back to Chennai, staying at Aditya's house, hating every part of it, right? And like that whole feeling of being back in Chennai was just so ugh, because it wasn't home anymore. And there was so much anxiety about going to Georgia Tech because अभी तक तो चौड़ में आके सब कुछ कर लिया है कि यार we'll throw myself at the problem of the, we are standing next to the problem, right? So there was a lot of anxiety at that time, right? There was a lot of self-doubt. There was a lot of this thing कि क्या होगा, क्या करेंगे, इतना दूर जा रहे हैं, कैसे करेंगे. There was obviously excitement, but it is also being back home, right? I'm sure you have felt it too after college, going back home before you got your joining letter. Oh yeah. That For it me, for you it was 2 months. For me it was from May until Jan. We got the letter in around November. And we were to do a course. अगर हम उसको पूरा नहीं करते तो हमें निकाल दिए जाते I before even getting into HCL. So, anyways. Yeah, like that whole thing of staying at home again, and I think I had outgrown being at home. To be honest, when I look back at it, right? नहीं हो रहा था मेरे से, and but like you had to. So by the time I think I got on the flight, I had figured it. मतलब I had been like अब तो क्या ही, अब तो bags pack हो चुके हैं. I have a plan for everything. उसके पहले was very scary when I was preparing for it. Because बीच में they were like connecting with people, किसके साथ रहूँगा, कहाँ रहूँगा, क्या क्या localities अच्छी हैं, क्या नहीं अच्छी हैं, कौन से courses लेने हैं. But wasn't this a little exciting part कि नई life चालू हो रही है? No, because it was very unknown, right? It was very scary. There was excitement. There was excitement of landing there, of looking at the college, meeting new people, new way of living. US, you never like you'd never only seen it in movies.
so the expectation was very high, uh, and it was scary, but it was very, very exciting for sure. And there was a lot of relief also, right? Because you're going, Explain further. कि मतलब you're going and doing what you had planned. Ah. We booked a flight in Lufthansa. Ooh, you flew Lufthansa. Flew Frankfurt. to Frankfurt, हाँ. and आज की डेट में कितना आसान लगता है बोलना यार, ओ लुफ्थांसा फ्रैंकफर्ट एंड ऑल दैट. Man, back then, oh my God, Lufthansa, oh my God, Frankfurt, and oh my God, US. that's insane. What parts of life that I've not touched for a while. US के बाद वाला बाद में बात करेंगे. But I still remember tracking the flight on the monitor, and it is just so fascinating that you could see where you are in the plane, right? किस part of the world. So इसको कैसे पता यार? And taking pictures of everything. And there were two people I flew with who I knew who turned out to be like, but not very close. But at least एक ये था कि अच्छा 2 और लोग इंडिया से जा रहे हैं, which was nice. And yeah, it was unreal almost. But there was a lot of fear of US people, judgment, because you're coming from like a small city. There's a feeling ki, I don't really deserve this, all this just happened to me. So there was a lot of fear of कि लोगों को सच ना पता चल जाए कि मतलब मैं how come you are here, which is very funny because none of everything we've spoken about till now just happened to be a certain way, right? Like obviously it's a very complex decision framework of like how output happens in life, and it's often not visible to the person who's in the driving seat. But at least in that moment when I was there, it was all a farce. It was all like a imposter thing going along, which was made more complex by the cohort of people I was with. Oh yeah. So, but it was fun, man. I feel like I was so excited being there. First few months of getting to choose your own subjects, going to classes where you could sit for the first week and evaluate whether you want to take this class or not. And the teacher Just is either imagine being given that option. I know. And the professor trying to tell you, impress you, either impress you or scare you. हाँ. कि Either or, correct. correct. If you are not doing XYZ, you shouldn't take this class. You will fail. I'm like, भाई मैं बोरिया बस्तर उठाओ निकलो. Okay, thank you, sir. And the whole thing of GRA मिलना, right? कि सब लोग ढूंढ रहे हैं, हर प्रोफेसर को से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं. There are people there with 5 years experience, 6 years experience from IITs and IITs. Nobody has heard of SRM. The only time people have heard of SRM is जब पेपर के बीच में ऐड आता था, right? I don't think there was anybody who was from a no-name college, right? And so much regionality, like Tamils with Tamils, Telugu with Telugu, Delhi with Delhi. I'm like nowhere. चेन्नई ग्रुप के साथ जाऊँ तो मेरे को तमिल नहीं आती थी. दिल्ली ग्रुप में मेरे को कोई रेफरेंसेस नहीं पता थे. इलाहाबाद का कोई यूपी का कोई ग्रुप नहीं होता था. So there's always this thing of like alienation, which was pronounced there. But being able to choose your own courses, first semester I did horribly wrong in choosing like hard courses because I thought हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ. We're gonna get to that, not in this one, but maybe the next one. There are 2 more questions that I want to ask, and then we can wrap it up. You touched upon a very good point that, yaar, it was such a far that I was from such a small town. It was almost कि मेरे को कैसे मिल गया ये, और लोगों को पता न लग जाए. Why do we have that insecurity? What do you think? मेरे को भी है, मैं बिलासपुर से हूँ, मेरे को भी है. क्यों होती है हमको ये? I feel because in my opinion, I think as we grow up, right, there's a certain amount of conditioning that happens in our childhood to ensure we fit into a society we are in. Sure.
And when you become independent and you go to a college or wherever, you are conditioned to fit in. So when I'm hanging out with people from international hostel, I am still that Allahabad boy who's pretending to be one amongst them. International hostels. And when I'm with Akshay's group, I'm pretending to be from cool, but like I'm from Allahabad, and not consciously. It is just conditioning because I can be at that level. Because right? that is your emotional range also. Yeah, right. I can talk about music, I can talk about movies, right? But I don't feel like that is who I am because there are parts where I have to push myself to fit in. Do you think that is where that exact moment is where the underconfidence come into picture? 100% because you're pretending to be something you're not. You're not. Correct. Why pretend? Why can't anybody who's from a small town be who that person is? I don't think From it's a boy about from small. Bilaspur. I think it's about the society you grow up in. You can be from a very large city, but still And grow still up have in a that very small conflict. society or like in a very limiting society that doesn't let you express or be the way you are. ये सही है बेटा, ये नहीं सही है. इनके सामने ऐसे बात नहीं करनी है. तो कैसे बात करनी है? So then that is a mentality thing, then a It city happens thing. at the childhood. Interesting. The last question that I ask everybody is from your story, from what we have discussed, I'm not even talking about when you got to US, when you started doing your masters. How you coming from a very small town, again going back to a very small town, telling the news reporter that you want to do masters in US, finally being able to sit in that flight and going to US. What is that one thing, one key lesson that anybody could take away from this? One piece of advice. I mean, if I could truly give an advice to people, it would be just trust in yourself. I think there's a little bit of faith you need to have in yourself and let the noise get drowned in that trust. Because if you truly just listen to what you want, you generally have most of the answers of what you should be doing. And if you fail, that failure also is a part of that process of you trusting yourself further and being able to figure who you are, because sometimes you lie to yourself. But I think following your heart and not following a like a blueprint in life is generally, in my opinion, works. Yeah, I think that would be the. So basically have a goal but be flexible with how you get there. Yeah. And I think you don't even need to have, in my opinion, have a direction, right? Have a direction you want to go to. And sometimes direction can happen by process of elimination. There's nothing wrong in it, right? कि आपको मेरे को ये नहीं करना है तो क्या करना है? उस हिसाब से भी you can find your answers, right? And life always doesn't turn out, the way you thought it would, right? But जो आएगा वो भी अच्छा ही होता है generally, right? Because it's a continuous process. So I think if you're looking back, I can say that, oh, I trusted myself, but a lot of things just happened. In that moment, I didn't even give it more thought. अगर मैं उसको और सोचता या और एनालाइज करता तो मे बी मैं कुछ अलग डिसीजन लेता. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, if living out of fear is something I don't think I used to, right? I used to not live out of fear. I used to live out of faith कि देखा जाएगा. And जो happy go lucky जो बोलते हैं इस चीज़ को, right? I feel like live out of faith, live out of love instead of live out of fear. And if you can tap into that, you truly can become who you're supposed to be. Follow your heart and be yourself. Absolutely. Thank you so much. We'll talk in the next one. Thank you for having me. और आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है. I genuinely hope you're walking away from this conversation feeling a little more fired up, a little more inspired, or maybe even thinking, you know what? If they can do it, then I can do it too. This is our neighborhood, and I want to hear from you. Drop a comment below. Tell me what resonated, what surprised you, or what you're going to tackle differently after hearing this story. Also, tell us how did we do and what we can do better. Let's keep this conversation going. If this episode lit something up in you, share it.
and hit that subscribe button and the bell icon. Trust me, the stories coming up are going to blow your mind. और अगर आप चाहते हैं कि अगली स्टोरी आपकी हो तो रीच आउट टू अस. द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. See you in the next story.